فائنانس مینیجر جو میں اس سے یہ بینیفٹس جو ہے نا وہ سیکھ کر رہا ہوں اور فور کاسٹ کر رہا ہوں کہ ہماری جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ انشاءاللہ بڑی جو ہے نا وہ سکسیزفل ہوگی. اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے لیے جو مین مسائل ہیں وہ ہمارے بجٹنگ کو اسٹریم لائن کرنا, ہماری کلیکشن کو اسٹریم لائن کرنا, کیونکہ ہمارے مین جو انٹرنل ریسورسز ہیں وہ ہیں فیس کے, اسٹوڈنٹ فیس کے. تو اگر یہ ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی, یہ سیپ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا تو اس میں ایکوریسی جو ہے نا وہ 100% ہو جائے گی. ٹی ایم سی یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اور ان کا جو ہے نا ان کی ڈیکسٹیرٹی, ان کی ایکسپرٹیز بہت اچھی ہے, اور ہم ایزی فیل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان دی نیئر فیوچر اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیں گے اور اس کے بینیفٹس کو جو ہے نا وہ اویل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. I just wanted to take a few minutes to describe the implementation process of SAP in our university. No doubt in the beginning it was looking like a big ask, and we are thankful that we implemented the Maktab ERP SAP system in our university successfully, thanks to TMC team, HEC and my own faculty who have successfully implemented different modules of FICO, HCM, SLCM, etc. It was looking like a difficult task, but their hard work, their dedication made it quite easy, and we are now adapted to perform different tasks here successfully. The system would bring so many positive changes in our administrative, financial management and student system management in the university, and we hope that though we are already go live, but we hope that for sustainability, especially in SLCM systems, we will be requiring a continuous support by TMC, HEC. In the end, I am highly indebted both to the TMC system and HEC and World Bank for giving us this opportunity to go bit interactive and to go bit fast for our growth and productive. Thank you very much. Higher Education Development Program HEC, this initiative is a long awaited and much significant step in higher education sector, is it aims to streamline and enhance institutional processes across the board. TMC is implementing the HEC SAP ERP SLCM system at our university. Their expertise, guidance and continued support have given us full confidence in the success of this project. At our university, the project has transformed our operations and will eliminate the routine challenges we faced across multiple sectors, including HR, budgeting, operations, planning, and most importantly, related to the student life cycle management. With this transformation, we are well on our way towards a digital university that would have efficient, transparent, and future-driven processes at our university environment. Thank you. Pakistan Institute of Fashion Design is a federally chartered public sector institution, and we've been selected by Higher Education Commission, which is a great project for our institution to upgrade and automate our whole campus management system. And TMC has been working with us, and they have done faculty training, staff training, and we've been very happy with their support, and we look forward that this project will be implemented in a given time, and it will benefit the faculty, the students and the whole team of PIAT for future. Let me first thank HEC and HEDP for this wonderful program, which is going to be implemented and going live on 5th of May at University of Child Health Sciences, Lahore. The University of Child Health Sciences is a unique concept because this is a specialized medical university and does not deal with undergraduate medical education, although we deal with undergraduate allied health and nursing education, but our primary focus is child health. And we primarily deal with all the areas which relate to child health and all the postgraduate programs which are being conducted through this university in the medical profession. The team which HDB had recruited or nominated for this university actually worked very hard, and we are grateful, and they were very professional. They did extremely exemplary job in terms of training our people, taking us through the whole process. They came to me whenever they had a problem and we sorted that out. And I think we are going to go live on 5th of May
I have already requested our Pro-Chancellor, Minister Specialized Healthcare Medical Education, to be present at that historic occasion where we are going to go live on SAP. This will have a special context when it comes to a medical university like University of Child Health Sciences, because our human resource is very unique, our faculty is very unique and rare as well, and the sort of areas that we deal with cannot be dealt with ordinary routine performance evaluation or enrollment. And I think this is going to be a major step forward, and I'm once again grateful to HEDP and HEC for selecting University of Child Health Sciences part of it as well. Thank you. अरोड़ यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज़ में है जो SAP को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, एंड वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन सिंध जो फर्स्ट कोहॉर्ट में हमने पार्टिसिपेट किया है। असल में जो SAP का पर्पस था वो बहुत क्लियर है। कोशिश यही होगी कि पेपरलेस जाएं, ज़्यादातर जो हम काम करते हैं वो पेपर्स पर होता है, क्योंकि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो यकीनन हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। SAP की वजह से डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान होगी, पूरी डिजिटल होगी, और TMC की टीम जिस तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया है, जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग कंडक्ट की है, हेड्स ऑफ टू देम। मुसलसल हमारे साथ उन्होंने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिन्होंने अभी इसको इम्प्लीमेंट कर भी लिया है, तो बहुत अच्छी तरह से हमारे मॉड्यूल्स चल रहे हैं। ख़ास तौर पर फाइनेंस का मॉड्यूल हो, उसके अलावा हम बात करेंगे अगर प्रोक्योरमेंट की, मेंटेनेंस की, जिसमें ज़्यादातर इश्यूज़ हमें आते हैं पेपर वर्क में भी, तो इस SAP की वजह से बहुत ज़िंदगी आसान हो रही है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि SAP की इम्प्लीमेंटेशन हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, गोया वो प्राइवेट हो या वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो। तो थैंक यू TMC टीम जिन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया, जिन्होंने हमें ये स्किल्स दिए। स्पेशली जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होता है नॉर्मली बहुत लेंदी होता है, बहुत टाइम टेकिंग, उसके साथ बहुत ही उसमें ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, लेकिन TMC की टीम ने इतना कोऑपरेट किया है और जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ काम किया, वी डोंट फील कि वो कोई अलग टीम है। वी आर पार्ट ऑफ वन टीम। अरोड़ में TMC का होना हमारे लिए भी बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। एट द एंड मैं HEC को सैल्यूट करूँगा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मेरी उम्मीद है कि HEC सारे ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बाउंड करे ताकि वो SAP पर आएँ और हम अपने रिसोर्सेज के साथ टाइम भी बचाएं और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।